ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। लाइक इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड सोशल फेमिनिज्म. So Marxist feminism draws on Marxist analysis of the social structure of capitalism. According to the Marx, the owners of the means of production, means bourgeois, exploit the workers, proletariat, to increase the profits. अब जिन लोगों का आईआर होगा या अगर कुछ लोगों का इंटरेस्ट होगा इन द हिस्ट्री, तो उन्होंने जो मार्क्स का आइडिया है वो पढ़ा होगा, उनको पता भी होगा. सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जो ऑनर्स है ना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बर्जियोस, वो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को. मतलब जो प्रॉफिट बनता है उसके जो ऑनर्स होते हैं ना, ऑब्वियसली वही होते हैं, और ज्यादा जो काम कर रहे होते हैं वो वर्कर्स कर रहे होते हैं, वो एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं. So Marxist feminism, feminist incorporated women in the larger context of Marxist analysis of capitalism social structure. Like अगर हम बात करें कि जो वुमेन है ना, they cater to physical needs of worker and bosses by preparing food, washing clothes and caring. अब जो वुमेन है ना, वो देखें जो भी उनकी फिजिकल नीड्स होती हैं वर्कर्स की, बॉसेस की, वो फुलफिल कर रही होती हैं. लाइक खाना बनाना, कपड़े धोना, पूरी केयरिंग, वो सारी जो है ना चीजें, दीज ऑल द थिंग्स आर मैनेज्ड बाय द वुमेन. वुमेन रिप्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द बॉसेस एंड द वर्कर्स बाय गिविंग बर्थ टू एंड रेजिंग देम. सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसके साथ साथ वही वुमेन ही होती है जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो भी प्रोड्यूस करती हैं. वो भी प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और उनको जो है पालना, उनकी केयर करना, तो ये सारे काम मैनेज कौन कर रहा होता है? वुमेन कर रहा होता है, वुमेन कर रही होती है. So women are not paid to this work. These individuals productive and reproductive benefit her family, whereas मैं women as individuals gain nothing out of it. अब देखे ना, वो वुमेन इतना काम कर रही होती हैं, मतलब दोनों काम, डुअल ड्यूटीज परफॉर्म कर रही होती हैं. उसको तो छोड़ो ही, लेकिन वो जो नेक्स्ट जनरेशन उनकी पैदा कर रही होती है, खाना बनाना, कपड़े धोना, वो पूरे काम जो है उनके कर रही होती हैं. लेकिन वुमेन को कोई भी जो है ना बेनिफिट्स नहीं मिलते. ठीक है, वुमेन आर नॉट पेड टू दिस वर्क. वो जो एक्स्ट्रा काम कर रही होती है डोमेस्टिक वर्क, उसके बदले उनको कुछ भी नहीं मिलता. सो दिस रीइंफोर्सेस द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म. तो हमें ये सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म को रिलेट करते हैं यहाँ पे, कि वुमेन की अगर हम पोजीशन को देखें ना इन द डोमेस्टिक स्फीयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक स्फीयर, कि वुमेन की पोजीशन अगर देखें ना डोमेस्टिक स्फीयर में, their relatively restricted access to paid work are caused by the capitalism. ये वुमेन की जो हालत है ना, ये या वुमेन की जो पोजीशन है ना डोमेस्टिक स्फीयर में, या उसकी जो रिस्ट्रिक्टेड असेस है, मतलब पेड वर्क जो है उसकी लिमिटेड असेस होती है, वो सब, उन सब के पीछे जो हाथ है ना वो कैपिटलिज्म का है. मतलब ये ब्लेम कर रहे होते हैं किसको? कैपिटलिज्म को. अब देखें ना, कैपिटलिस्ट सिस्टम, मेनी वुमेन हिस्टोरिकली they were expected to work in the home, like cooking, cleaning, and taking care of children without being paid. मतलब उन्होंने सब काम करने हैं, लेकिन पेमेंट नहीं मिलनी उन्हें, उनको. This unpaid domestic work benefits capitalism because it keeps labor costs down. So, if women were not doing this work for free, companies or the state would need to pay for childcare, obviously, for the cooking and for the cleaning. So, we reinforce the woman's position in the home by expecting women to focus on unpaid work at home. And the capitalism encouraged the idea that a woman's primary role is domestic. And the second is obviously the limited access to the paid work, because there is a traditional view that women should handle home responsibilities, and it often prevents them from participating completely or fully in the workforce.
Even if we take the example of today's, scenario, that even today, women often paid less are expected to work part-time so that they can manage home duties as well, which keeps them at a disadvantage in the economy. So, capitalism relies on women doing unpaid work at the home, which keeps labor costs low, reinforce traditional gender roles, unlimited women access to the paid work, and it also sustains and the benefits from the unpaid domestic labor performed by the women, like dependence on unpaid domestic work or domestic labor. And the second is that supporting the part-time and the precarious work and influencing the social norms to keep women in domestic sphere, and exploitation of women and reducing women's economic independence. So, कैपिटलिज्म coupled with the patriarchy, अगर कैपिटलिज्म और patriarchy दोनों चीजें मिल जाते हैं, तो obviously economic and the political system that puts women in great disadvantage and leads to exploitation and the oppression. अब देखें ना, ऑलरेडी कैपिटलिज्म इतना जो है वुमेन के लिए एक मतलब अनवांटेड एंड जस्टिफाइड द प्रीकेरियस जो वर्क सिचुएशन है वो क्रिएट कर रहा है, लेकिन जब पेट्रियार्की भी है होती है और कैपिटलिज्म और दोनों जब ये इम्पेक्ट करते हैं वुमेन को, तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन. So we can see here the successes of the Marxist feminism. Like number one is the forced government to introduce child care policies. Obviously, child care policies introduce हुई थी. और उसके बाद maternity leaves, जो एक बड़ा admirable जो है step है to bridge the wage gap and the gendered markets. Gendered markets मतलब वो कि define की होती हैं कि भाई यहाँ पे वो मैंने काम करना है, यहाँ पे मतलब जो कुछ areas जो होते हैं मेल डोमिनेटेड जो है वो होते हैं, और वहां पे जो है औरतें काम नहीं कर सकती. अब शॉर्ट कमिंग्स क्या थी कि उन्होंने ओवर एम्फेसिस किया था on economic, prevented them from taking other social cultural and religious factor responsible for the woman exploitation into the account. मतलब they forget talking about the other factors that are equally responsible for the women exploitation, like they can be the social factors, they can be the cultural factors, or they can be the cultural come religious factors. So the entire focus was on the economic factor that can be counted as a shortcoming of the Marxist feminism. So it was all about the Marxist feminism, and in the next lecture we will be covering psychoanalytic feminism. Thank you.